Assalamu alaikum dear students, welcome to our modern English class 5. Let's start the exercise of the lesson effects of littering. So we have already done the question answers, filling the blanks and words meaning plus missing letters. Now we will do the remaining exercise. Please open page number 94 on your books. We are going to read about anagrams. Anagram is a word formed by changing the order of the letters of another word. जब हम word के letters का order change करके एक नया word बनाते हैं तो this is called anagram. Like slate is a least and lane is a lean. Anagrams are words that contain the same letter but arranged in different order. यानी letters वही होते हैं but उनको different order में change किया जाता है. Act is anagram of cat. जैसे एक्ट में ACT है, लेकिन अगर हम लोग इन वर्ड्स का कम्बिनेशन चेंज करें लाइक CAT कर दें तो एक डिफरेंट वर्ड बन जाता है. लेट्स सी हाउ वी कैन गेट दैट. अ पार्ट ऑफ योर बॉडी इज आर्म, ARM, आर्म. Okay, and a male sheep is ram, RAM, ram. So a short sleep during the day, a short sleep during the day. जैसे कि हम लोग जो दिन के दरमियान दिन में जो छोटी सी नींद लेते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको नैप कहते हैं, NAP, नैप. समथिंग टू कुक विद, और हम लोग कोई चीज़ जिसमें पकाते हैं उसको क्या कहते हैं. अब नैप में स्पेलिंग्स हैं NAP, तो हमने NAP की तरतीब चेंज कर सकते हैं, जैसे पैन, PAN, पैन. सो थिंक ऑफ द मोर वर्ड्स टू मेक एन एनिमल दैट पीपल राइड, द प्लेस वेयर लैंड मीट सी, something you bake, hair on your face, a place to see art, something that makes you sneeze. You can take the help of your teacher and you can discuss with your friends to complete this exercise on your book. Another word for jump, another word for white, an animal that lives in pack, more like water, a dog's feet, an insect that stings, a place to wash dishes, what covers your body, the past tense of leap, something to serve food on. This is, my dear students and teachers, the answers are also available on your solution keys. Let's start the grammar skill. A verb. Verb क्या होता है? We have already read about verbs means action words जो किसी action को show करते हैं, like jumping boy, sleeping baby, a girl playing with ring. So verb is an action verb. It shows it shows that jumping, sleeps and eats. These are the verbs in the following sentences and phrases. Verbs तीन टाइप के होते हैं. First is be and then do and have. When it is about auxiliary verbs में जब हम लोग be के verbs use करते हैं, that is am, is, are, was, were, being, been. For do we can use does, do, did. And have के लिए has, have, had and having. Modal auxiliaries never change form, like can, could, shall, should, and will, would, ought to, will, may, not, may, might and must. Some irregular and irregular words we are going to discuss. Regular verbs follow regular conjugation pattern. उनमें एक specific pattern होता है. Irregular verbs do not follow a regular pattern. Regular verbs from their form, their past tense and past participle by adding ed. जब हम regular verbs को past बनाते हैं तो उनमें ed यूज़ करते हैं, जबकि irregular verb में ed यूज़ नहीं होता बल्कि उनकी form change हो जाती है. जैसे कि I say watch and उसका रेगुलर वर्ब होगा watched, बट इफ़ आई से break तो उसका irregular verb होगा broke. Okay, irregular verbs have the same form from the past tense and the past participle. Irregular verbs can have either different forms or same form. Regular form में second और third form जो होती है verb की वो same होती है, लेकिन irregular में वो different हो सकती है. Regular verbs are relatively new to the language. वो language में new होते हैं. Irregular verbs are derived from the old English. You can see a list of regular and irregular verbs. Learn all these verbs and their types, their past form and their past participle form, because you will use in your sentences of your own. So there is a long list, and then you will complete the blank. So he become dash really giggle. So you use the present tense verb in the present in parentheses to fill in the sentences with the past tense, then complete the crossword puzzle. So हमने यहाँ पर ये down और across हमने present और इसको पास्ट के साथ टेंस के साथ कंप्लीट करना है, और फिर हम अपना ये क्रॉसवर्ड बुक पर कंप्लीट करेंगे. लाइक ही बिकम रियली गिगल, सो ही बिकम्स रियली गिगल. एंड व्हेन इट्स अबाउट पास्ट एंड शी नोज
dash the answer. She knew. Knows का second form knew है. That is an irregular verb. She knew the answers. So complete this exercise on book, and then you will be able to complete the crossword. बी डू एंड हैव हैज़ हेल्पिंग वर्ब्स. दे आर यूज एज हेल्पिंग वर्ब. जैसे बी की फॉर्म्स हमने पढ़ी थी इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग. सो दीज वर्ड्स आर यूज एज हेल्पिंग वर्ड इन सेंटेंसेज इन डिफरेंट टेंसेज. शी इज नॉट रीडिंग. बी की फॉर्म इज यहाँ यूज की गई है. द स्टूडेंट्स आर टेकिंग टेस्ट. इट वॉज नॉट रेनिंग. द पी एंड डज नॉट. डू की फॉर्म डू, डज एंड डिड यूज की जाती है. सो द पी एंड डज नॉट रिंग द बेल. द मदर डिड नॉट सेंड to party. We do not like pizza. Have की फॉर्म हैज़, हैव, हैड या हैविंग यूज़ की जाती है. He has not invited us. Everyone had not done his work. The laborers have not completed the task. Read the following sentences and notice the use of can, should, may. If you come earlier, you can wait for us. Okay? Can और should में. can के लिए हम लोग जब कोई परमिशन हमें चाहिए होती है, जब हम कोई एबिलिटी शो करते हैं तो हम लोग कैन यूज़ करते हैं. जब हमें कोई परमिशन चाहिए होती है तो हम मे यूज़ करते हैं. लेकिन जब हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो देन वी यूज़ शुड. इफ़ यू कम अर्लियर यू कैन वेट फॉर अस टू शो द एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी. मे आई लीव नाउ. परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है. वी शुड ऑफर प्रेयर्स रेगुलरली. ऑब्लिगेशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. वी मे नॉट हैव कॉट फीवर. जब हमें कोई डाउट होता है, टू एक्सप्रेस डाउट हम मे नॉट यूज़ करते हैं. दिस यू न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू. टू शो दैट समथिंग इज़ इम्पॉसिबल. जब कोई काम नहीं हो सकता या पॉसिबल नहीं होता तो हम उसके लिए कैन नॉट यूज़ करते हैं या कांट. वी शुड नॉट अटेंड द क्लास टुडे. शुड नॉट मीन्स टू शो कमिटमेंट. ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए. Make sentences with the modal verb used in your words. So you have to use these words may not, can, cannot, should not in your sentences. My dear students, we use cannot or may not and should not in writing. But when we are speaking, we can use their short form like can't and may not and shouldn't. Let's learn some of the sounds. These are consonant clusters. We have already read about the two consonant cluster at the initial and final positions. Let's read these words and find the final and initial position of these words. Like STR, it means string, stream, straight, scarf, scale, scare, black, blast, blame, camp, stamp, ramp, sand, grand, island, int, joint, point, faint. A consonant cluster is a group of 2 or 3 letters in a word. Each consonant keeps its own sound in the word. हर कॉन्सोनेंट में जब जो भी वर्ड है, जैसे STR तो स्ट्रिंग, STR तीनों की साउंड डिफरेंट होती है और वो अपनी साउंड को हमेशा हाईलाइट रखते हैं. राइट द वर्ड्स दैट बिगिन एंड स्टार्ट विद 3 कॉन्सोनेंट लेटर्स. आपने फाइनल पोजीशन पर और इनिशियल पोजीशन कॉन्सोनेंट क्लस्टर खुद से लिखने हैं ऑन द गिवन टेबल. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड योर फ्रेंड्स एज वेल. Let's do the practice of this dialogue. Assalamu alaikum Raza. Raza says Walaikum assalam dear. Aga says how are you? Raza says I'm well. What about you? Aga, what is up? You are looking very happy. Something special? Raza, yes, I'm going to the northern areas in these spring holidays. Aga, that's great. I have also planned to visit my grandparents with my family. Raza, good. Could I borrow your shoes for this trip? Raza says yes sure. Come to my house to take them. अब वो कहीं northern areas में जा रहे हैं and the friend wants the shoes to borrow from his friend. So he is saying yes you are welcome. हमें अपने फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए. जब भी उनके साथ उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो शेयर करनी चाहिए. This is what the dialogue says. Please practice the dialogues with your friends. Read the given mind map and write 2 paragraphs about climate change. So there is a mind map given. The topic is climate change. जो हमारा climate बदल रहा है, जैसे कि बहुत जल्दी गर्मी आ जाती है और वो काफ़ी टाइम रहती है और सर्दी बहुत शदीद होती है, फॉग होती है, स्मॉग होती है. तो ये सारे क्लाइमेट चेंज जो आ रहे हैं उनकी बेसिकली रीजंस क्या हैं और ये हमारी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं. इसमें हमारा राइजिंग टेम्परेचर है, लॉस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, लिटरिंग है, पोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है. So you can
थिंक जैसे कि पहले वाले हम दो पैराग्राफ इसमें लिखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में या पहले पैराग्राफ में हम लोग इसकी रीजंस बताएंगे, जैसे लिटरिंग है, ये जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, जैसे कि पोल्यूशन है, इसकी वजह से हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, ये रीजंस हैं। और उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, टेम्परेचर राइज होगा, पानी नहीं मिलेगा और हमारी एनिमल लाइफ या हमारा इन्वायरमेंट खराब होगा। सो वी विल टेल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द सेकेंड पैराग्राफ। प्लीज़ राइट इट हेयर। आप यहाँ पर बुक पर पॉइंट्स लिख लें और नोटबुक्स पर इसको प्रॉपरली, फर्स्ट ड्राफ्ट आप बुक पे लिखें एंड सेकेंड ड्राफ्ट आप अपनी नोटबुक पर नीट करके लिखेंगे। My dear students, this was the end of the lesson. We will see in the next video with the unit number 11. Till then, take care. Allah Hafiz.